Also confirm if my screen is visible or not. यस इट्स विजिबल. समीर हम 5 मिनट वेट कर लें कि कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो इट वुड बी बेटर. Okay. Okay, once again confirm, is my screen visible and my voice audible? यस यस परफेक्टली ऑडियो. Okay. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली हमारा आज का जो इवेंट है, आज का जो सेशन है वो फोकस करता है कि किस तरह आप जो है वो एक बेहतरीन एप्लीकेशन लिख सकते हैं एमएलएसए की. सो हमारा जो एक ये सेशन है, ये सीरीज़ ऑफ सेशंस हैं जो कि एपिसोड्स में चलेंगे. जो सारी एपिसोड्स हैं वो टाइम टू टाइम आती रहेंगी और वो आपकी सारी की सारी सेंटर्ड होंगी एमएलएस से एम्बेसडरशिप प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के ही गिर्द रिवॉल्व करेंगी. सो फॉर दैट हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एक अच्छी एप्लीकेशन लिखना. सिंस एमएलएसए का कोर यानी कि बैकबोन जो है वो एप्लीकेशन है, सो वील स्टार्ट विद द एप्लीकेशन. So let's start with the agenda. What will be our agenda? First of all, we'll be introducing you to the MLSA program, which perks and benefits you will get from that, and then we'll tell you how you can design your MLSA application. You just won't start writing it as it is. You first have to design that application and then you will write it and submit it accordingly. So you should know how to design that. We'll tell you that. Other than that, we'll let you know about the important guidelines which you will have to follow in order to write a captivating MLS application. And at the end, we will open the stage for question answers. So, telling about myself, my name is Samir Ahmed Siddiqui. I'm a full stack ASP.NET developer. Mostly, I deal with full stack web applications, and my focus is Microsoft .NET Core and Blazor server. I've been working on that a lot. I'm a final year IT student here at Air University, and apart from that, I'm also a president of the MLSA Air University chapter. And before that, I've been working in this chapter as a lead as well as the member. I started as a member of the social media team, and then I went up the ladder towards the lead, and then now, Alhamdulillah, I'm a president. Along with me is Muhammad Ahmed Mahmood. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो दिस इज़ अहमद महमूद. तो मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. तो करंटली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट शॉर्ट लॉजिशियंस. उसके अलावा मैं सी एस का 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ. तो आई होप ज़्यादातर इधर स्टूडेंट सी एस से आए होंगे. तो आई एम योर सीनियर राइट नाउ. और उसके अलावा मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ माइक्रोसॉफ्ट ए लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर ए यूनिवर्सिटी चैप्टर का. और मैं बीटा एम्बेसडर हूँ एट माइक्रोसॉफ्ट. तो इसके अलावा अगर मैं अपने बारे में अनप्रोफेशनल चीज़ें बताऊँ तो वो ये कि मैं आई वॉज ए गेमर. और अब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं गेमिंग नहीं करता. उसके अलावा मुझे बातें करना पसंद है और सिखाना भी पसंद है. और आई एम वेरी गुड विद टीचिंग एंड लर्निंग. सो आपसे दोबारा बात होती है नेक्स्ट. सो समीर ओवर टू यू.
Thank you, Ahmed. So let's just start with what is actually Microsoft Learn Student Ambassador. So basically, Microsoft came up with a program जिसमें वो बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करें और माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए इम्पैक्ट क्रिएट करें वर्ल्ड में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस तरह एज्योर को यूज़ करके क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं। आप किस तरह माइक्रोसॉफ्ट 365 को यूज़ करके एक अच्छी सी वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप किस तरह टीम्स को यूज़ करके एक प्लेटफॉर्म यूज़ किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह आप हर टेक्नोलॉजी जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया, वैसे माइक्रोसॉफ्ट इज़ ऑलवेज एन एम्बेसडर ऑफ यूजिंग ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर विच इज़ बेनिफिशियल, but for here we usually use Microsoft technologies. So Microsoft came up with this program known as MLSA, Microsoft Learn Student Ambassadors, where we have some opportunity where they have some opportunities for the students across the globe and those who are in their university either in undergraduate or postgraduate program. So इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट आपको अगर आपके अंदर वैलर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है या कॉन्फिडेंस है कि आपने चेंज लाना है या आप कुछ सीख रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको अपॉर्चुनिटी देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए और आप जो हो वो डेवलपर और आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए, सो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर गिव्स यू द विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज व्हिच इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर. Similarly, Microsoft Learn Student Ambassador not only give you Visual Studio, it also gives you LinkedIn Learning. It also gives you Azure credits, so you can use them monthly. They actually renews, so you can use it again and again. This is only for Microsoft Learn Student Ambassadors. So basic aim is to create the technological awareness apart from networking. You can do the networking with the people across the globe, not only in Pakistan. After you become a learned student ambassador, you can actually communicate with people across the globe. I have talked with Indians, I have talked with Americans a lot through this platform, and I have learned from them. I knew how to use this program a lot, how I can make an impact through this. So इसका बहुत ही इजी तरीका है कि ये अपनी एप्लीकेशंस ओपन करते हैं। तो ये कोहोर्ट ओपन होता है ईयर में, आई गेस 3 या 4 टाइम्स ओपन होता है। सो इसमें हमारे पास एप्लीकेशन की डेडलाइन जो कि करंट कोहोर्ट की चल रही है वो है 30 नवंबर, और ये रिज़ल्ट जो अनाउंस हो जाएगा वो होगा 17 जनवरी को। Minded, this is 17th January 2024, not 2023. My apologies for that. And other than that, let's start with कि आप किस तरह student ambassador बन सकते हैं. You just have to go to this link mvp.microsoft.com/student ambassadors. Once you go to that link, you will be redirected to this page, and from here you have the button of apply now. You apply now from here, and then you just get some basic information. First you have to create an email address which is affiliated with Microsoft. You can also use the Gmail as well, since this is just an application. And then you will get some basic credentials, and then you will might get some two factor authentication, something like that. And then after that you will get the basic profile. You have to create your basic profile, and after that you have to fill 3 questions of the application, and then you have to submit that. Moving forward, we have 3 milestones. The first milestone is basically new. जैसे ही आप Microsoft में select होते हैं Microsoft Learn Student Ambassador में, तो आपको एक new milestone मिलता है. न्यू माइलस्टोन के अंदर आपको कोई फैसिलिटी स्टार्टिंग में नहीं मिलती. यू जस्ट हैव टू साइन इन फॉर द @studentambassadors.com email domain. When you get that domain, you get Microsoft 365. As soon as you get Microsoft 365, you get free Word, Excel, Office, like everything for that. And then you get Teams, Microsoft Teams. So you just have to, you can say, onboard this program through this new student ambassador. You just get Microsoft 365 in the beginning. Then afterwards, you have to do some things Ahmed will tell you further.
After that you go to alpha, then you go to beta, and the final one is gold. Gold is the most hard way to pursue. Like you just have to work a lot, and you have to be at least a year in this program. So at least I want you guys to become beta. सो बीटा बनने के बाद आपको स्वैग किट मिलती है विच इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग. यू गेट स्टिकर्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, यू गेट वाटर बॉटल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, यू गेट the hood, the shirt from Microsoft, and there are many more things as well. You get the certificate, you even get the ID card from Microsoft, which is quite a big recognition for you. And there are more things as well. When you become the gold, you get another swag kit, which consists of a bag, a light. That light is actually the LED light of your PC, or for your desktop, you can say. So you get a lot of things. Actually, when you become alpha, so आपको LinkedIn learning मिल जाता है, आपको Azure के credits मिल जाते हैं, और एक और चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा वर्थ है, आपको Microsoft की हर जो प्रोडक्ट है उसकी लाइसेंस की मिल जाती है. Like you get the license key of each and everything of Microsoft. आपको विंडोज 7 की चाहिए, विंडोज 8 की चाहिए, 8.1 की चाहिए, और 10 11, you get the license keys. And apart from that, you get the downloads for each and every Microsoft products. So this is a lot to learn, and these are some great things you will get from Microsoft. Coming to the perks and benefits, Ahmed will tell you about it. सो आई एम बैक अगेन. अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये टाइमलाइन के साथ बताता हूँ कि सबसे पहले आपको एक ईमेल आ जाएगी कि बॉय यू आर सिलेक्टेड. तो आप बड़े एक्साइटेड होंगे, आप साइन अप करेंगे, उनको रिमेनिंग डिटेल्स बताएंगे और आप बन जाएंगे न्यू माइलस्टोन. आपने अचीव कर लिया. जैसे ही आप न्यू माइलस्टोन रिसीव करते हैं, आपको एक ईमेल आईडी रिलीज़ हो जाती है, जो कि डोमेन होती है स्टूडेंट एम्बेसडर्स वाली. उस ईमेल आईडी को आप बस अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 में पुट करें और हे यू गो, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 फुल. अब आपको क्रैक करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अब आपका वो माइक्रोसॉफ्ट 365 मज़े से चलेगा. तो एनीवेज उसके बाद फिर आप अल्फ़ा की तरफ जाते हैं. मतलब आप वो जो कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करते हैं, फिर आप आते हैं अल्फ़ा. वो न्यू माइलस्टोन की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है. मतलब वो आपसे पिक्चर कहेंगे, आप ये बारे में थोड़ा सा बताएं अपनी डिटेल, मतलब आप क्या करते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, थिंग्स लाइक डैट. फिर आप अल्फ़ा के ऊपर आते हैं, और अल्फ़ा के बाद आपको वीडियो स्टूडियो इंटरप्राइज, मतलब आप अगर सी एस या टेक रिलेटेड से हैं तो आप वीडियो स्टूडियो ऑब्वियसली उससे फेमिलियर होंगे. उसमें आपको इंटरप्राइज वर्जन मिलता है. आप अगर कोई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उस पर करेंगे तो यस, इट विल वर्क मज़े से. और फिर आपको मिलते हैं 150 मंथली क्रेडिट एज्योर के अंदर. अब इस क्रेडिट को आप बहुत अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं. तो मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ. मैंने तो अपना पोर्टफोलियो है उसको मैंने होस्ट किया हुआ है एज्योर के ऊपर. मैंने वर्चुअल मशीन रखी हुई है एज्योर के ऊपर. मतलब कोई बहुत ही हैवी टास्क है, जैसे कि आपने कोई मॉडल ट्रेन करना है और आपके पीसी पोटैटो है, तो आप आराम से वहाँ से उनका वर्चुअल मशीन यूज़ करें और उसके ऊपर आप अपने क्रेडिट को यूटिलाइज़ करें अच्छे वे में. और आप इसको जस्ट कैश आउट नहीं कर सकते कि आप कहें जी $150 मेरे अकाउंट में है, तो सॉरी ब्रो, ऐसा नहीं होगा. लिंक्डइन लर्निंग विच इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आपको लिंक्डइन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिलेंगे और आप उसको करके सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं. और अगर आप सर्टिफिकेट ना भी लेना चाहें, आप ऐसे लर्निंग के लिए बहुत बेटर है. अच्छा, फिर आपको करवाना पड़ता है एक इवेंट. इवेंट ऐसा होगा कि आपको बस ऑडियंस चाहिए होती है कुछ, और आपने किसी एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने प्रेजेंट करना होता है, लोगों को सिखाना होता है. बस उसमें आप कुछ भी सिखा सकते हैं. जैसे मैंने जब करवाया था तो मैंने एज्योर क्लाउड के ऊपर करवाया था. मैंने पहले लर्न किया एज्योर क्लाउड पे, क्योंकि वो भी माइक्रोसॉफ्ट लर्न के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वहाँ आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलती हैं. तो आप वो मैंने लर्न किया, फिर मैंने उसके ऊपर एक इवेंट करवाया. ऑडियंस आई, उनको मैंने खुद भी लर्निंग की और उनको भी सिखाया, और मुझे एज्योर के उसी वक्त ही लव हो गया था. तो एज्योर इट लिटरली वेरी गुड क्लाउड प्लेटफॉर्म. अच्छा, फिर आप इवेंट करवाते हैं, आपका इवेंट अप्रूव होता है, देन आप बनते हैं बीटा एम्बेसडर. बीटा एम्बेसडर बनने की सबसे कूल थिंग होती है जो संगीत ने अभी बताई है, जिसमें आते हैं स्वैग किट. स्वैग किट में बहुत बहुत सी कूल स्टफ होता है. सबसे जो फिट मुझे लगती है वो होती है बॉटल. उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का लोगो और माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर का लोगो. उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो समीर ने बताई थी. और उसके अलावा फिर आपको हर
ईयर एक इवेंट करवाना होता है और वो उसको अप्रूव करवाना होता है माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हम भी करवाते हैं। और जैसे कुछ भी आपको लगे कि आप सिंपल वीयू स्टूडियो से लोगों को HTML सिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इवन आपने अगर कोई इवेंट करवाना है तो आपको एक गिटहब रेपो मिलती है जिसके अंदर ऑलरेडी स्टफ़ पड़ा होता है। आप वहाँ से किसी भी स्टफ़ को यूज़ करके आप इवेंट करवा सकते हैं, लोगों को लर्निंग दे सकते हैं। आपका काम सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। आइदर वे आप उसको आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, और जैसे भी हो। फिर आता है गोल्डन माइलस्टोन। पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा बीटा होते हुए इवेंट्स करवाने होते हैं, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना होता है और कुछ कनेक्शंस बनाने होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। फिर आप गोल्ड माइलस्टोन के लिए अप्लाई करते हैं और देन आपको लोग भी आपको नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर आप एक गोल्ड एम्बेसडर बनते हैं और उसके बाद बस फिर आप इससे आगे और कोई माइलस्टोन नहीं है अभी। लेकिन यह है कि गोल्ड के ऊपर फिर आपको अगेन एक स्वैग किट मिलती है, वो उससे भी कूल होती है। उसके अंदर भी चेंजिंग आती रहती है। जैसे जब मुझे बीटा किट मिली थी ना तो उसमें स्टिकर नहीं थे, जब रेहान को मिली थी तो उसमें कूल से स्टिकर भी थे और भी काफ़ी कूल चीज़ें थी। तो वो अमेंडमेंट ज़रूरत के साथ होती रहती है। इवन दो आपको माइक्रोसॉफ्ट पूछता है कि आप हमें बताएं कि भाई आप क्या चाहते हैं कि आपको एक किट के अंदर क्या होना चाहिए, तो आप वोट कर सकते हैं। और फिर अगर आपका वोट काउंट होता है और अगर आप कहें कि भाई मैं चाहता हूँ कि शर्ट की बजाय एक मतलब वेब कैम हो, तो दे विल कंसिडर दैट मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, आई गेस ये चीज़ कवर होती है। समीर, ओवर टू यू। Thank you, Ahmed. Now let's come to the main part. Let's just get started on how you can write an MLSA application. पहली चीज आपके पास जो है, आपने चैट जीपीटी यूज नहीं करना। चैट जीपीटी अगर आपने यूज कर लिया और अगर उन्होंने पकड़ लिया तो आप माइट बी डिस्क्वालीफाई हो जाएं और आगे आप मे बी जो एप्लीकेशन है वो ना प्रोसीड कर सकें। आपने जब वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो कोशिश करें आपकी जगह पे, आपके रेजिडेंस में ऐसी जगह हो जहाँ पे खामोशी हो, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ताकि आप जो है अदर देन दैट के कोई डिस्ट्रैक्शन आपके वॉइस में आ जाए, अदर देन दैट आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ये मेन चीज़ होती है, मैटर करती है। क्वालिटी से ज़्यादा आपकी क्वालिटी ये मैटर, वीडियो की क्वालिटी से ज़्यादा आप बोल क्या रहे हैं, आप किस तरह बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो ज़्यादा मैटर करती है। स्टिल आपने वेब कैम को अवॉइड करना है। यू वॉन्ट यूज़ द वेब कैम, you should not use the webcam. You should use your phone's front camera to record your application, and keep that in mind that you won't get the expected result in your first attempt. You might get some bad results initially, so शुरू में आपको कोई 10 attempts भी करनी पड़ सकती हैं। Like I remember during my time, I have to take at least 6 to 7 shots, and at that time I did that using iPhone 5. So you can expect कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी कैसी है। मैटर ये करता है कि आप बोल क्या रहे हैं, मैटर ये करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो इस चीज़ पे फोकस करना है और आप कंप्लीटली विजिबल होनी चाहिए, आपका फेस कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए। फेस से मुराद ये है कि आपके फेस कट और ये सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके सिर्फ जो है वो बाल नज़र आ रहे हो, बाकी आपने सही से एडजस्ट ना किया। तो एडजस्टमेंट वगैरह आपने बिल्कुल चेक कर लेनी है अपनी वीडियो की। पेशेंस, जैसे आपको बताया, पेशेंस रख के हर काम करना है। आपको कोई भी चीज़ जो है वो इनिशियली एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगी। और आपने जब लिखना स्टार्ट करना है तो ये नहीं कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन देखी आपने एप्लीकेशन के अंदर ही लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले आपने अपना खोल लेना है नोटपैड, या फिर आपने खोल लेना है अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें, नोटपैड खोल लें, कुछ भी खोल लें, उस पर क्राफ्टिंग शुरू करें। Application is not about just writing an application. You have to craft it first. You have to think about what things you did earlier, which might impact, which might create the positive impact through your application. So अब आते हैं हम एप्लीकेशन के ब्रेकडाउन में। सो बेसिकली यू हैव 3 क्वेश्चंस। सो आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस आपने एक का आंसर वीडियो के थ्रू देना होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो की कुछ गाइडलाइंस बताई। और कुछ का आंसर जो है वो आपने दे देना होता है, 2 का आंसर आपने दे देना होता है टेक्स्ट के थ्रू। टेक्स्ट के थ्रू जब आप आंसर देंगे तो आपका आंसर जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए,
You don't just beat around the bush. They don't care about that. You just have to be precise. You just have to be to the point, and you have to make it a bit brief about something. You just don't use single words or something like that. So you have three categories: welcome, connect and guide. सो वेलकम में हमारे पास जैसे पहला सवाल है कि वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन के सवाल हैं, ये मेरे सवाल नहीं, एप्लीकेशन के ही सवाल हैं. वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु कैन प्रोवाइड एन इंक्लूसिव, accessible and authentic environment to learn. Tell us about a specific time you welcome a new person into one of your communities. How would you use that experience to be a better student ambassador? पहली चीज़ आ गई है इसमें. अब आपने सोच लिया, अब आप अपने दिमाग में उस चीज़ को, उस इवेंट को बताएं कि मैंने कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टाइम था कि जब किसी बंदे को बोला हो कि आओ मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करो, इस सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एम एल एस ए, मे बी यू आर नॉट इन द एम एल एस ए, यू आर इन सम एल सोसाइटी. So how did you create the impact? How did you what was the specific time when you welcome a new person? So you have to tell about that briefly. Like I told you, you have to be precise towards that specific topic. You have to be precise toward that category, not something else. So you have to do this accordingly. So we are looking for students who can provide an inclusive and authentic environment to learn. पहली चीज आ जाती है. दूसरी चीज जो कनेक्ट की बात आ रही है, वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज एंड वांट टू कनेक्ट देयर कम्युनिटीज टू देयर peer. Tell us about a specific event you have planned that connected diverse audience together. How would you use that experience to be a better student ambassador? Like you can see कि हमें इन लोगों को ऐसे चाहिए होता है कि फॉर एग्जांपल यू नो अ पर्सन, you know a guy who knows a guy and who is willing to give a session on something. So you, for that obviously you need to have a strong community tie. For example, you have good ties with me or my community, and you are not in the community for now, let's just assume. So you should know how to approach me or someone and just say, okay, I want to have an event on something, I will bring the guest. And then you should have the like valor, or you should have that specific language, body language, or you should have that confidence that you actually emphasize me कि मैं जो है वो उस बंदे को बुलाऊं. ठीक है. सो आपका जो है वो ऑडियंस को किस तरह आपने एंगेज करना है, ऑडियंस आप किस तरह ला सकते हैं, उसके लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिटी टाइज. आप जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, जितने भी पीयर से मिल रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, आपको उनसे सलाम दुआ या फिर आपको उनसे बातचीत करनी आनी चाहिए. आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है लिंक्डइन. Let me just give you an example so that this part of the question makes it clear for you. When I was new in this ASP.NET, I wasn't sure whether to switch to MERN stack or stay in that .NET tech. So what I did, I went to LinkedIn. I messaged everyone who was in ASP.NET and asked about their preference. कि क्या मैं इसमें रहूं या ना रहूं. That was a time when I wasn't that much proficient in this ASP.NET. Now I can't. Now I cannot switch. But it is the time when I was new into this thing. So one of the person approached me and he said that let's have a call regarding this. When we had a call, he told me each and everything, the pros and cons of this, my tech stack and everything, that should I opt or not. Well, he was in favor of opting this, so I am currently opting it. But now what actually happened after that, I was referred to one of the not the startup, but one of the companies in which he was currently working in. Just because of the connection, I was able to get the referral. This is how connection works. You can do this as well. You have any question, you just go to LinkedIn and see the headline of the specific person. If you need to ask the question, be proficient, be professional, and then do it. Once you do it, you will get to connect to that person. And what will happen eventually, you can ask them to come to join the community or to have a session, something like that. That's how you can be a great ambassador as well. Finally, is the guide.
We are looking for students who are driven to guide their peers in learning technical skills. Tell us about one technical skill you have learned and how you were guided to learning. How would you use that experience to be a better student ambassador? Like, you should know how to teach a certain skill. For example, if you're a MERN stack developer, I told you this doesn't matter that much in Microsoft whether you if you are here working on Microsoft technologies or not. You should have the ability to teach one specific skill to someone else. For example, you are good in MERN stack, you should know how to deliver that MERN stack knowledge to other people. You should know how to communicate with other people. You should know how to craft the syllabus or outline to teach someone. So for this is the most important thing. Now, how would you use that experience to be a better student ambassador? We'll talk about this shortly. I was just here to tell you about these three categories and to emphasize that so that you don't get any issue. Now, when it comes to demonstration, let's do this. For example, we have these three questions. Let's just open the notepad. For now, I'm not opening the Microsoft Word or something, but you can do that as well. Now let's come to the first question. We are looking for students who can provide an inclusive, accessible, and authentic environment to learn. So first of all, you have to consider yourself to be an inclusive person, to be the person who actually works in an authentic environment. So now just think of a time when you welcome a person into one of your communities. Okay. Now, for example, I think of that as when I was in first semester, or you can say when I was in third semester, I welcomed one of my friend in in the society I was currently in. Here's then you tell about uh, the thing which you learn from that society. For example, I would just go as I got to learn about HTML and CSS. Since that person, or you can say, and since that friend of mine was also new in web development, I encouraged him to join as well so that he can also get the idea of how he can pursue with the web development essentials. This is the basic. I'm just drafting it. I won't just copy and totally paste it on my application. First, I'll just make this draft, which I just made it now. Now, since now you have seen that this part is completed. Tell us about a specific time you welcome a new person into one of your communities. So this is where I wrote the first part of this. How would you use that experience to be a better student? Now this is the main part. Now you have seen that you actually created an impact, like you actually made someone join the society just because you were getting benefit from that as well. So now what you will do, you will say that how would you use that experience to be a better student ambassador? I will make sure that each and every person who approached to me regarding any query, I will respond accurately, and then I will also encourage him or her to join my society or my community st- or my community, and together we will or we can get an impact.
You can see I just did nothing. I just crafted an application. Now, once I have crafted an application, it won't be that hard for me to actually add more things in the beginning or at the end, and that will create a good a good answer to that specific question. So for this, do you guys have any question till here? You can raise your hand. I can see. Okay. So let's then move forward. Now we have, let's just remove this. I guess you are now familiar with it. Now we have the second one, connect. So what is the main purpose of this connect? We are looking for students who have strong community ties and want to connect their communities to their peers. Tell us about the event you have planned that connected diverse audience together. Here you will tell about your affiliation with any society in the past or present. For example, I just say I'm in ABC society which works in web development. I am currently in that society, and through this society, I have created a strong community ties, just as I told you. So, what I'll say, for example, I am currently in ABC society of my institute, and through this society, I have worked in many events as an organizer and was quite, you can say, active in their events. Tell us about the specific event. Now you will just say that my society hosted an event on Azure, and I got the opportunity to bring people from diverse background to join the event. Moreover, I was familiarized with cloud computing and the focal person, you can say, or and the keynote speaker with whom I called was XYZ. So you just have to be brief in everything you just tell. So this is the first part of that question, and then once again you have this last part in all the questions. How would you use that experience to be a better student ambassador? You can say, for example, you just have to think it by yourself. I'm just thinking it as soon as I'm getting something in my mind. So I'm just brainstorming it. So I'll say after I become an ambassador, a student ambassador, I would be more better. I will connect with speakers on LinkedIn and will encourage them to join my event as a keynote speaker and as a keynote speaker and tell about the certain technology. So this is how you will do this. And then you just have to further elaborate this. You can say that I will also learn some technology from that specific person, and then you can also say that I will host on-site events, which in which I will call some people from other organizations who do have some knowledge about that specific event or something. Finally, we have guide. So I guess both of the welcome and connect are clear to you. Both of them are quite basic. So the last one is guide. We are looking for students who are driven to guide their peers in learning technical skills. As I told you,
you should have technology in your mind whenever you are applying for MLSA application. If you are not a person of technological background, it's okay, but if you are the one who is keen in learning technology, you should apply. It doesn't matter you if you are doing bachelor's in English or bachelor's in psychology and you did not and you do not have any knowledge about programming or something, but you are keen to learn that, then is the time you should apply for student ambassadorship program. So for here we have the guide system, the guide category, and in that you just have to tell about the technical skill which you have learned or which you were guided to learn, and then how you will use that specific skill to become a student ambassador, a better student ambassador, to be precise. So for that, you have to write. We are looking for students who are driven to guide their peers in learning technical skills. Tell us about one technical skill you have learned. You just have to write something. One skill which I learned was, you can say, web development. Don't write HTML. HTML is like the part of that skill. Web development, app development. You can just write anything. Let me put a slash here, or you can say programming, computer programming, etc. You can just think of anything. You can think of machine learning or whatever you want to. And after that, you have learned. After that, you have crafted that specific skill. You just have to briefly tell about that skill. For example, you will say, I worked when I worked in a specific society, community, or let's just say community. I was hyped about the web development and was willing to learn it. I started with HTML and then took it up to CSS, building numerous projects. I walked up my ladder to learn JavaScript, and you just get this on and on till how much skills. I don't know what are your skills. If you are learning app development, maybe you are first familiarized with Java and then Android Studio and Flutter, etc. So that depends on the skills which you have learned or are learning right now. Then comes to the second part of that question, that how do you use that experience to be a better student ambassador. In order to be a in order to become a better student ambassador, I will make sure that all the skills which I will learn, I will enable others to learn as well. In place of other, you can write my friends learn as well, or my colleagues, or whatever is suitable. Let's just don't write others. That doesn't make much impact. I will enable my friends to learn as well. I will host sessions on Teams regarding that skill, or I will host, you can say, or I will host a boot camp or about that skill. Make sure that the questions, the queries are answered whenever they arise. You just elaborate it. So that's how you can write a better, you can say, application. Just to write a better application, keep that in mind that you just don't have to jump into the application. You just first have to craft it. After crafting that, you can just move into the application process.
Is that clear? You guys can raise your hand so that I get to know that you are actually understanding this process. Great. Excellent. Okay, thank you so much. Now I'm quite relaxed that you guys are actually understanding. Let's just move forward. So the application breakdown is now done. There are some important things with Ahmed will tell you. Ahmed, please proceed. ये श्योर। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके अंदर सबसे पहले ये है कि आपको जो 3 क्वेश्चंस 24 मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किए, किसी एक का आपने आंसर देना है, लेकिन वो अपने वीडियो की फॉर्म में देना है। अच्छा, तो मैं अपनी अगर बताऊं, तो जब मैंने एप्लीकेशन लिखी तो मैंने चूज़ किया था लर्न वाला पार्ट। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप किसी को टीच वाला था कि किसी को आपने सिखाना है, तो हाउ वुड यू टीच देम एंड थिंग्स लाइक दैट। क्वेश्चन वैसे चेंज हो गए, जब मैं था उस वक्त थोड़े डिफरेंट थे, अब और हैं। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी बहुत मेहनत करके, और मैंने कहा जी कि एज इट इज़ बोलूँगा। मैंने कैमरा लगाया, बोलना स्टार्ट किया। तो वो स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा होता था, मैं कुछ और बोल रहा होता था। तो आपने भी घबराना नहीं है, आप भी जब बोल रहे होंगे ना तो वो वैसा नहीं होगा जैसे आपने लिखा है। तो मैंने एक टेक ली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ 5 6 के बाद फिर जाके कुछ चीज़ें मैच होने लग पड़ी। फिर मुझे समझ आ गई थी कि मुझे बगैर स्क्रिप्ट के बोलना है। फिर मैंने बगैर स्क्रिप्ट के बोला, और जो मेरे माइंड में आता गया मैं वो बोलता गया। लेकिन एक चीज़ का मैंने मेक श्योर किया था कि मेरा एक फ्लो ठीक हो, और मैं जो बात की कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो सही से कम्युनिकेट हो। मैं काफ़ी एनर्जेटिक था उस वक्त, और मेरे बॉडी लैंग्वेज और मेरा ये काफ़ी मतलब अच्छा था। आई नो पहले नहीं ठीक था शुरू में, बाद में, लेकिन जब इतनी दफ़ा वीडियो बनाई तो आई वॉज कंफर्टेबल, और देन फिर अच्छी हो गई मेरी वीडियो। बाकी तो इसकी वीडियो की रिस्ट्रिक्शन होती है 90 सेकंड से 120 सेकंड मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कीप इट बिटवीन दैट लिमिट्स। अगर इससे कम ज़्यादा हुआ तो उन्होंने कहना है कि ये तो टाइम का भी से नहीं ख्याल रख रहा, तो बाद में क्या करेगा। अच्छा, उसके बाद जो बाकी टेक्स्ट है उसके अंदर 150 से जो 300 वर्ड है, जो अदर 2 क्वेश्चन वो आपको टेक्सचुअल फॉर्म में लिखने होंगे। तो टेलीप्रॉम्प्टर वाला इज़ ए गुड आइडिया, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो कि जिसको लगता है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर खुद से ज़्यादा अच्छा बोल सकता है, तो गो फॉर डैट। उसके अंदर ये है कि आपके एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं, आपकी एनर्जी अच्छी से जाती है, और आपका जो पॉइंट है वो अच्छे से सेंड होता है, तो वो आपके जो बोलना है वो बोरिंग नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर कुछ 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 की नेचर होती है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से भी देख के अच्छा बोलते हैं, तो वो टेलीप्रॉम्प्टर तो आप जब क्वेश्चन कम कर रहे होंगे, इसकी वीडियो बना रहे होंगे, तो आपको फ़ौरन रियलाइज़ हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा हाँ, यस, और समीर अभी बता रहा था कि वो जो कीज़ आपको मिलती हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट की की मिलती है, और उसकी मैं वर्थ कैलकुलेट की थी, तो वो तकरीबन 90 लैक्स बनती है। तो आप जैसे अब मेरा मोटो ये है कि बिफोर माई ग्रेजुएशन आई शुड बाय अ मैकबुक, जिसके अंदर मैं बगैर क्रैक वाला वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो कर लूँ ना, क्योंकि आपको पता है मैकबुक के अंदर तो क्रैक होता नहीं है, तो मुझे भी यू नो और उसके अलावा आपको जो सारी चीज़ें आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और अ, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, तो आपको एमएलएसए से प्रोफेशनली क्या मिलता है? तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा मिली थी वो थे लिंकिंग। जब मैं एमएलएसए में, अच्छा मेरी स्टोरी कुछ इस तरह कि मैं एमएलएसए एयर चैप्टर में बाद में आया था। पहले मैं एमएलएसए एम्बेसडर बना था। वो कैसे? महा विच वॉज अ सुपर गर्ल, और उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की थी। तो मैं एयूवी के अंदर था, उन्होंने मुझे कहा अहमद यू शुड अप्लाई फॉर दैट। मैंने कहा महाबाजी ने बोला करने का तो करने का। फिर मैंने एप्लीकेशन जो सी है वो कंपाइल की, उन्होंने रिव्यू की, उन्होंने कहा नहीं अहमद इसमें ऐसे ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको चेंज किया, और फिर मैंने रिव्यू करवाया। उन्होंने कहा फिर अब ठीक नहीं, अब इसको फिर रिव्यू फिर ठीक करके दिया। फिर उन्होंने रिव्यू किया, फिर मैंने उसको वीडियो आंसर्स को सबमिट करवाया। अच्छा, और जब फिर मैं एम एल एस से और अचानक से मुझे एक, मैं तो भूल भी गया था मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है। मुझे इब्राहिम भाई, विच वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ एम एल एस एयर, तो उनका मुझे मैसेज आया कि अहमद अपना ईमेल तो चेक करो, आज डेट रिलीज़ होनी थी। मैंने कहा ओके अभी करता हूँ। देखा तो आई वाज सरप्राइज के
आई वॉज सिलेक्टेड, मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मेरे उसके जब मैं एमएलए से एयर में आया तो मेरे बहुत से लिंक्स बने यूनिवर्सिटी के अंदर, आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत टैलेंटेड लोगों से, जिसके अंदर मैं शहरियार सर शहरियार होते हैं वो कोड एयर्स, आपको पता है हमारा फ्लैगशिप इवेंट होता है एमएलए से एयर का, उन दोनों पे वो एज ए जज आए थे, उनके साथ काफ़ी लिंकिंग, गोल्ड एम्बेसडर्स, मुझे काफ़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनसे। मुझे ये पता चला कि हाउ टू गेट इन टू इंडस्ट्री, वो भी मुझे एमएलए से में उसने काफ़ी जो उनसे वो पार्ट दिया है। और इवन दो कुछ लोग हमारे जो एक्स एम्बेसडर थे, मतलब जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, उनके साथ भी अभी तक मेरी लिंकिंग एमएलए से ही के थ्रू है। अच्छा, और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा था वो ये कि अगर आप एमएलएसए में आना चाहते हैं तो आप हम आगे एक कोड आएगा जिसके अंदर आप एप्लीकेशन जो भी कंपाइल करेंगे, डू गिव इट टू अस, हम उसको रिव्यू करेंगे। और समीर प्लीज़ बैक टू द स्क्रीन, में पिछली स्क्रीन के अंदर से और भी चीज़ें मेंशन करना चाह रहा था। थैंक यू। तो यस, आपको दूसरी बात कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कैसे? अब मैंने जो वीडियो बनानी थी वो एक तो इंग्लिश में थी, तो उस टाइम मैं जूनियर था, तो यूनिवर्सिटी में आते हुए आपको पहले पहले इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही होती। तो आई वॉज गुड इन राइटिंग इंग्लिश, लेकिन जब बोलने की बारी है तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको इंग्लिश आती है बट कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो आपको कॉन्फिडेंस उससे मिला, मैंने फिर इवेंट होस्ट करवाया तो उससे और आई एम वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन टू फ्रंट ऑफ द पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी या थिंग्स लाइक दैट। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न, जिसके हम एम्बेसडर्स हैं, वो एक पूरा प्लेटफॉर्म है। वहाँ आप जिस चीज़ के बारे में आप सर्च करें, ऑलमोस्ट उसके ऊपर एक प्रोफेशनली कंपाइल्ड एक डाटा पड़ा होगा जिसको आप लर्न करके, जिसके गो थ्रू करके उस प्रोसेस से आप किसी भी चीज़ को जौन सा है वो आप लर्न कर सकते हैं। जैसे एजोर को मैंने वहाँ से सीखा, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा है। उसके बाद देन आई लर्न अबाउट मशीन लर्निंग, उसका भी बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा है, और लिस्ट गोज ऑन। वो आप उसको अगर करना चाहें तो उसका भी लिंक इधर ड्रॉप कर देते हैं, उसको भी आप डू चेक इट आउट। तो आपको उस वो भी एमएलएसए के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा था कि आप हमारे माइक्रोसो एम एल एस एयर में 14 एम्बेसडर्स हैं। हमारी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टैट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हम एम एल एस एज हैं। तो हम और भी चाह रहे हैं कि नेक्स्ट कोहॉर्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम एम एल एस ए को एम एल एस एयर यूनिवर्सिटी से बनवाएं। तो डू अप्लाई। अच्छा, तो ये आप क्यूआर देख लें, इस क्यूआर को या तो आप कर नहीं सकते एनीवेज, लेकिन इसको स्कैन कर लें और इसको रख लें। आपने जो भी एप्लीकेशन कंपाइल करनी है इस पर सेंड करें। तो हम 14 एम्बेसडर्स हैं, तो हमें पता है कैसे एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को टेक केयर करना होता है। तो वो हम इंशाल्लाह आप उसके ऊपर दें तो आप विल गेट बैक टू यू इन 2 और 3 डेज। आपको अच्छी सी ईमेल आ जाएगी, इसमें हम आपको रिव्यू उसके चेंजिंग और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, वी विल कवर डैट। एंड ट्राई टू बी गुड इन दैट बिकॉज लास्ट मुझे 3 रिस्पॉन्सेज इसके थ्रू आ चुके हैं, और 3 के 3 में जब मैंने क्वेश्चन उनसे पूछा हुआ था तो उन्होंने एक एक वर्ड का आंसर लिखा हुआ था। लाइक फॉर द वेलकम पार्ट दे जस्ट रोट द आंसर 24/7। लाइक इसका मैं क्या करूँगा, इसका एमएलए से क्या करेगा। यू जस्ट हैव टू बी क्वाइट डिटेल्ड रिगार्डिंग दैट। नाउ आई एम श्योर कि जब आपने इवेंट अटेंड कर लिया सो यू नो how to write an application. So you can first send us the draft application, and then we will read that application. We will see the changes which you can make. You can also send us your video response, and then we can also see that as well. You can just paste the drive link, OneDrive or on any drive which you want, and then we will just review your application. This will stay between the ambassadors only. This won't be outsourced to anyone else. So you should be comfortable with that. And I'm looking forward for at least 20 applications from Air University alone. And I am quite determined that at least out of those 20, 10 will be selected. And I really want you guys to apply for that. And if you guys have any questions, you can always ask in the community as well. I'll share the QR of the community as well. And you can say this form, you can scan this QR code, you can keep it to yourself, and you can just send us the draft application which also have some questions. You can just answer it, and then one of the ambassador will reach out to you with the changes
that you might need. Let's just move forward. ओके तो एवरीवन, अब एमएलएसए के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब आप एमएलएसए यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अपकमिंग इवेंट से। आपको अगर आपने उसके साथ लिंक्ड रहना है, अप टू डेट रहना है, तो स्कैन दिस कोड और आपको हमारे कम्युनिटी के तकरीबन सारे लिंक्स और थिंग्स लाइक दैट वो मिल जाएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारा सिर्फ यही मोटो होता है कि क्रिएट इम्पैक्ट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, पता है हमारी यूनिवर्सिटी में जीडीएससी भी है। और आप लोग सोच रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इनकी तो बहुत लगती होगी। तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। हम सबका जो मोटो होता है वो होता है इम्पैक्ट क्रिएट करना, आप लोगों के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना और इर्द गिर्द लोगों के लिए। तो हम उसी के लिए काम करते हैं। वी आर नॉट नोन फॉर आवर पीपल, वी आर नॉट नोन फॉर द पर्सनैलिटी। हमारी कम्युनिटी हमारे काम से जानी जाती है और हमारा काम है इम्पैक्ट क्रिएट करना। तो वी कोलैब विद अदर सोसाइटीज़ इन द यूनिवर्सिटी और अदर कंपनीज। हम हमारे जितने भी इवेंट्स हुए हैं हमने काफ़ी कंपनीज के साथ कोलैब किया, उनसे स्पॉन्सरशिप ली। तो और इवन जो कोड एयर 1.0 के विनर्स थे उन्होंने फिर 2 को भी हम स्पॉन्सर किया। और हमारे बाकी कंपनीज के साथ भी लिंक्स बने और लिस्ट गोज ऑन। ओवर टू यू समीर। Now this floor is open for question answers. Let's just take the question answers from you guys. If you guys have any, you can raise your hand and we'll unmute you. So I have one question from Abdullah Shahid. Allow mic. Yes, Abdullah, you can start. Assalamu alaikum. My Walaikum question assalam. basically is कि the whole MLSA thing, it's about Microsoft empowering students to their technologies, like उनका exposure आए, and you can put that into the community. Um, does that apply to all the skills? Like abhi during this meeting, I searched that they have SEO toolkits too, जहाँ पे they just analyze different sites and have the whole SEO data. So if you someone is into that, would that count as a good application if you write according to that? Like if you're not exactly writing about development, you're writing about SEO. Okay, I am in like learning these skills through my that are Microsoft tools, and like they like teaching the community that those skills, etc. Would that count as the good application? या development side पे होनी चाहिए? If that is making an impact, for example, अगर आपने SEO की बात की है, SEO हम कोई भी डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी यूज़ SEO टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन। ओके, सो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी उसका टच आता है। इट्स नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ लाइन, इट्स नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ जस्ट टू द लिटरेचर साइड। So yes, you can definitely do that. If you use Microsoft technology in anything, then you are most welcome. For example, अगर आप एम्बेसडर बनते हैं और आप वो टूल यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ व्हाट माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, सो यू कैन यूज़ दैट। ये the main purpose is just to use the just to showcase the technology of Microsoft. If obviously when we talk about SEO, so SEO comes in the part of development one way or another. So yes, you can do that. I hope this answers your question. Yeah, that's like we have to emphasize that we're using Microsoft tools for the whole impact that we're trying to create, like Excel or Word that are using SEO and keyword research, etc. So like it's all part of a Microsoft suite. So you have to Yes. emphasize that, right? Okay, thank Exactly. you. For let's just say example, you want to make other learn Python. Python is not from Microsoft, but what do you use for Python? You use Visual Studio Code. So now you are using Visual Studio Code, which is a Microsoft technology. So that doesn't matter if you are teaching Python or something. The main focus now revolves around the Visual Studio Code. So yes, that's how it works. आई वांट टू ऐड वन थिंग कि जो महा मंजूर जिनकी मैं बात कर रहा था, तो अगर कोई इस मीटिंग के अंदर जो नॉन टेक है और वो समझ रहा है कि नॉट फ्रॉम सी एस नॉट फ्रॉम आई टी, तो मैं कैसे एम्बेसडर बन सकता और शुड आई हैव प्लेस। तो येस यू हैव प्लेस। तो महा मंजूर वो बी एस फिज़िक्स की थी और स्टिल उन्होंने भी अप्लाई किया और शी वाज बीटा एम्बेसडर। तो यस,
आप किसी भी फील्ड से हों, बस यू आर इन, इफ़ यू आर अ लिटिल बिट इनटू टेक, तो यू कैन अप्लाई. Do you guys have any more questions? डोंट शाय. सो पूछो I प्लीज. have Shahryar. Let me just allow the mic, I guess. You have a question. Yes, Shahryar, you can unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum मैं Assalam. तानिया कैसी करती सुबह है। Okay, no problem. किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई बात शेयर करना चाह रहा हो, क्वेश्चन ना भी हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशंस हो एमएलएसए के लिए, वी आर ओपन फॉर Okay, दैट. we have Sayyid Muhammad Taha. Yes, Taha. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. अच्छा, मुझे वेलकम का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़रा दोबारा एलेबोरेट कर दें। बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल. Let me just open that part. So welcome वाला जो part है, मैं screen भी share कर देता हूँ साथ में. जो वेलकम वाला पार्ट है, अब मिसाल के तौर पे वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु कैन प्रोवाइड एन एक्सेसिबल इंक्लूसिव एंड ऑथेंटिक एनवायरनमेंट टू लर्न. ठीक है. अब इसमें हमारे पास ये चीज़ आती है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट ये लोग चाह रहे होते हैं स्टूडेंट से जिसमें लोग लर्न भी करें, कुछ सीखें भी. ऐसा नहीं है कि आप ऐसी कम्युनिटी, ऐसी सोसाइटी या ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे कोई सोसाइटी ही ना हो, या जहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट में हो आप जहाँ पे कोई सोसाइटी ना हो, जहाँ पे कोई काम ही ना हो. वो ये चीज़ नहीं चाहते. So tell us about a specific time you welcome a new person into one of your communities. For example, this is not only about the university. Let's just say you are in your college and you welcome someone to learn something. You are in a specific society, community or anything. तो वहाँ पे आपने किसी दोस्त को बोला हो या किसी भी पीयर को बोला हो, किसी भी कोलीग को बोला हो कि आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट इन दिस कम्युनिटी एंड आई ऑल्सो वांट यू टू जॉइन दैट एज वेल. आपने उसके बारे में बताना है थोड़ा बहुत. आपने बताना है कि किस तरह आप इम्पैक्टफुल थे उसके लिए. मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सोसाइटी से HTML CSS सीख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसकी बार बार एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक क्रक्स है एक तरह से वेब डेवलपमेंट का. तो मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने HTML CSS सीखी है इस सोसाइटी से, तो आप भी सीख सकते हो इस सोसाइटी से. मैंने इस तरह सीखी है तो यू शुड ऑल्सो ज्वाइन. अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो आप ज़रूर इस सोसाइटी को ज्वाइन करो. Now, just by welcoming another person, you have created an impact which you might not feel that much, but it actually have some great impact to that person who was trying to learn or who was trying to get into the field of web development. हाउ वुड यू यूज़ दैट एक्सपीरियंस टू बी अ बेटर स्टूडेंट एम्बेसडर. जब आप स्टूडेंट एम्बेसडर बन जाएंगे तो ऑब्वियसली आप एयर के होंगे या किसी और यूनिवर्सिटी के भी माइट भी हों, लेकिन एयर के होंगे. आप स्टूडेंट एम्बेसडर बने, हमने आपको ग्रुप में ऐड किया. जब हमने आपको ग्रुप में ऐड किया तो यू हैव द प्लेटफॉर्म टू जस्ट present yourself. You have the platform to enable other people, to enable us, to ask us कि हम रिक्रूटमेंट करें किसी के, या यू कैन से रिक्रूटमेंट नहीं भी हो रही तो यू कैन इनेबल अस टू होस्ट एन इवेंट जहाँ पे हमारी सोसाइटी में आने के लिए, हमारी कम्युनिटी में आने के लिए लोगों को वेलकम किया जाए. अब मिसाल के तौर पे हमारी ये जो कम्युनिटी है जिसका लिंक भी शेयर किया है चैट में और आपको स्लाइड्स में दिखाया है, दिस इज़ आवर कम्युनिटी. You just tell other people to join this community. What you will get from this community, you will get to learn a lot. You will get the career counseling. You will get the insights from us who are the experience in this ambassadorship. सो आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया. ठीक है. आप स्टूडेंट एम्बेसडर बन के इस कम्युनिटी को बढ़ाएंगे. आप जो है वो बोलेंगे कि मैं और लोगों को चाहूँगा कि वो स्टूडेंट एम्बेसडर बने. मैं और लोगों को गाइड करूँगा और लोगों को वेलकम करूँगा कि स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए अप्लाई करें. सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट. ये चीज़ अपने वेलकम के पार्ट में एलेबरेट करके लिखनी होगी. माय क्वेश्चन इज आंसर क्लियर है? ओके, थैंक यू ताहा. एनीवन एल्स?
I have another Abdullah, I guess. Yes. Yes, Abdullah. On the tasks, specific Uh, events करवाने होते हैं for Microsoft. You have to get them approved and demonstrate them that you have created an impact. That's how you jump tiers. Actually, I didn't get your question because your voice just got distorted. You can repeat that question. Okay, apologies. Am I clear now? Yes, no, you are clear now. Right. So I said that there are tiers, right? Your beta or gold tiers, and to jump between those tiers, do you have to arrange some certain Microsoft approved events जहाँ पे you demonstrate that you have created an impact in the community? Is that the way to jump tiers? Yes, more or less, yes. You can do this by doing this. Ryan, you can also answer this question. You have more like experience in this. Anyways, yes, you can do this by just hosting the events. You can just jump tiers. Not only like that, actually आपने इवेंट भी कराया और आपने खुद भी कुछ सीखा, तो इस तरह की चीज़ें मतलब आप कंपाइल अगर कर लेना तो आप जो है वो क्या कहते हैं टीयर्स में जम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने अल्फ़ा बनना हो तो आपने एक चीज़ करनी होती है, और वो चीज़ है वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है माइक्रोसॉफ्ट लर्न का जो वेबसाइट है उसके अंदर से एक लर्निंग पाथ कंप्लीट करना। कोई भी एक लर्निंग पाथ कंप्लीट करेंगे आप अल्फ़ा बन जाएंगे। जब आप अल्फ़ा बनेंगे तो आप लिंक्डइन लर्निंग और इस तरह के जो आपको प्रोडक्ट्स बताया था वो आपको मिल जाएंगे, और आपको सारी कीज़ भी मिल जाएंगी। उसके बाद आपके पास सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है इवेंट होस्ट करना। एक इवेंट आपने होस्ट किया, आप बन गए बीटा। बीटा बनने के बाद आप 10 इवेंट्स होस्ट करते हैं या 15 इवेंट्स, जितने भी इवेंट होस्ट करते हैं उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके चांसेस गोल्ड के बढ़ जाएंगे। आपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा, आपके गोल्ड के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड दोज हु आर इन ऑन द हु आर नॉट इन देयर फाइनल ईयर, they have more chances of becoming a gold. So I would say कि जितने इवेंट्स हो सकते हैं कराएं, जितने चैलेंजेस हो सकते हैं वो होस्ट करें, और फिर उसके बाद जो है वो we'll see you becoming a gold. Right, thank you so much. That No answers problem. my question. और एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, नंबर ऑफ इवेंट्स के अलावा टारगेटेड ऑडियंस पे भी थोड़ा, मतलब कितनी ऑडियंस को आपने टारगेट किया है वो भी थोड़ा मैटर करता है। लाइक फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स मैंने कोई ऐसा सिंगल इवेंट्स नहीं करवाए, लेकिन मैं हमेशा कोड एयर, वर्ड स्टैकिंग, कोड एयर 2.0 इसके अंदर मैंने कंट्रीब्यूट किया है। और उस कंट्रीब्यूशन के अंदर जो मेरा इम्पैक्ट किया है वो तकरीबन 60+, 50+, 100+, इतने प्लस स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स पे गया है, तो वो भी मैटर करता है, और मैंने वो अप्रूव करवाया और माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया है। और वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जब आप कोई इवेंट करवाते हैं तो दे ऑल्सो गिव यू सम पर्क्स, जिसके अंदर जो होस्ट करवाता है उसको भी मिलते हैं, और उसके अलावा जो अटेंडीज़ होते हैं उनके लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने इवेंट करवाया, उसके अंदर अटेंडीज़ थे 20। आप उनका जैसे उसका प्रूफ होगा, आप उनको जब सबमिट करवाएंगे तो दे विल गिव यू, या तो वो आपको Xbox 360 के वाउचर्स, आप अगर वो लेना चाहें वो देंगे, या लिंक्डइन प्रीमियम भी देते हैं। उसकी मतलब 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन वो भी फ्री में मिलती है, विच इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल थिंग। तो वो भी हमें मिलती है, और वो फिर हम अटेंडीज़ के अंदर शेयर करते हैं। Okay, we have another question. Thank you, Ahmed, for your insights. Yes, Saqib, you can now unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. एक्चुअली मेरा जितना भी यहाँ एक्सपीरियंस है 3 साल से मैं कर रहा हूँ इधर ग्राफिक डिज़ाइन में, तो मैं ये पूछना चाहता था कि जस्ट स्टेइंग इन ग्राफिक डिज़ाइन, हाउ कैन आई मतलब इस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट मैं कैसे कर सकता हूँ? साकिब, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, एमएलएसए फोकस करता है अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे,
और वो ज़्यादा फोकस करता है टेक साइड पे, टेक्नोलॉजिकल साइड पे। आपने अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, आपने यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग सीखी होगी, आपने यूनिवर्सिटी में मतलब इस तरह डेवलपमेंट का थोड़ा सा टच किया होगा, बेशक टच नहीं भी किया तो लाइक आगे में भी टच कर लें। तो ये है कि आपने अगर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा भी सीखा है और आप टेक्नोलॉजी से फैसिनेट हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी से मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ही परस्यू उसको कर लूँ, तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो इसके लिए अप्लाई करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में रह रहा हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट है, फिर आप स्टूडेंट एम्बेसडर अगर बन भी जाते हैं, सो यू वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट एनी इम्पैक्ट विच मोर और लेस वॉन्ट हैव एनीथिंग बेनिफिट, एनी बेनिफिट फॉर यू। सो अगर आप थोड़ा सा भी रखते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं सी प्लस प्लस कर रहा हूँ, मुझे सी प्लस प्लस में थोड़ा मास्टर कर लिया मैंने, मास्टर नहीं तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट श्योर है, सो उससे क्या होगा, आप उसके बारे में अपनी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस आप जो है वो टेक्नोलॉजिकल साइड पे थोड़ा बहुत आ जाती है, सो आप फिर उसको जो है वो किसी भी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पे कोड कर सकते हैं और उस तरह इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिक थिंग ये है, आपके अंदर होने चाहिए हंगर, या आपके अंदर होनी चाहिए क्रेविंग फॉर द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल साइड। वो अगर आपके अंदर है, सो यू आर गुड टू गो फॉर द एम्बेसडर, अदरवाइज यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ओके। एंड दूसरा मैंने ये पूछना था कि अब लाइक 6 मंथ्स पहले हमारा एक ऑफिस था, मेरे भाई का ही था, तो वो स्टार्ट करते हुए तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ ऐसा कर दें कि 6-7 पीसी है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर होता है, एक सर्वर 2012 एग्जैक्टली। 2016। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था, 30 के 40 वीडियोस थी यूट्यूब पे, वो मैंने एक ही साथ प्लेलिस्ट देखे, तो मतलब सर्वर के बारे में अब मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैंने सर्वर ठीक है। बनाया था, तो ठीक वहाँ है। पे अदर यूजर से वही साइन इन करते थे, तो मैंने सारी उनकी लिंक्स जो थी इंटरनेट की वो कनेक्ट की थी, वो एक ठीक सर्वर है। बनाया था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ये बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे मतलब उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा कनेक्शंस हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कि मैं उस क्रेडिट्स को यूज़ कर सकूं फ्री में या कोई ऐसा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हमेशा से मैं चाहता था मुझे मिले। सो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी आफ्टर बिकमिंग एन एम्बेसडर। एम्बेसडर बनने के बाद आपको हर महीने 150 का क्रेडिट मिलेगा एज्योर से, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह भी आपने विंडोज सर्वर की बात की, विंडोज सर्वर आप किस तरह उसके अंदर काम कर सकते हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी आप सिखा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मतलब आपने सिर्फ कोडिंग तक ही रहना है, आपने माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी टेक्नोलॉजी विंडोज़ के अंदर किस तरह चेंजेस करते हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। तो मतलब बिल्कुल बेसिक नहीं, ये नहीं कि आप एक इवेंट करा दें कि किस तरह रीनेम करना है फ़ोल्डर को, तो ये चीज़ नहीं करनी। मतलब कोई एक अच्छी सी चीज़, जैसे आपने एज्योर की बात की, एज्योर पे किस तरह आप क्लाउड होस्टिंग कर सकते हैं, आईएएम यूज़र्स कैसे बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ सीखें, ये चीज़ अगलों को सिखाएं, आप माइक्रोसॉफ्ट में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। चलें इंशाल्लाह। और दूसरा एक चीज़ ये है कि गूगल की साइट से मुझे फ्री क्रेडिट्स मिले थे, लाइक 300, वो जब स्टार्टअप करते हैं गूगल क्लाउड कंसोल पे, हम्म। तो उस वक्त लाइक 3 मंथ्स पहले मैंने हम्म। देखा था कि मीडिया सर्वर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। हम्म। तो अपने यहाँ पे 1 टेराबाइट की एसएसडी लगा के तो मैंने मीडिया सर्वर उस पे बनाया था, और वो अभी तक माशाल्लाह होस्ट हो रहा है। तो हम्म। ये भी मैं चाहता था कि एज़्योर पे, लाइक मैंने देखी हैं वीडियोस बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च किया, तो मुझे लाइक पता लग गया है कि एज़्योर जो है उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो वो हमेशा से मैं चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, हर जगह हर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं। कुछ लोगों को AWS ज़्यादा बेटर लगता है, कुछ लोगों को एज्योर बेटर लगता है, और कुछ लोगों को GCD बेटर लगता है, GCP बेटर लगता है। सो लाइक दीज थिंग्स हैपन। आपको इसी तरह एक टाइम पे गूगल डॉक्स ज़्यादा बेटर चलता था, उसमें आपको AI ज़्यादा असिस्टिव मिलता था, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आ गया। तो टेक्नोलॉजी में आती रहती है चेंजेस। काफ़ी लोग लिनक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, सो इन चीज़ों में आता रहता है, कोई ना कोई ऐसी पार्ट होता है जिससे अगले बंदे को बेनिफिट मिलता है।
अब आपको क्या पता जीसीपी से ज़्यादा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल रहा हो, अगलों को ना मिल रहा हो। सो पीपल टू पीपल दिस वेरीज अ लॉट। चले इंशाल्लाह लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं इंशाल्लाह एप्लीकेशन में क्या। थैंक यू सो थैंक मच यू, साकिब। थैंक यू सो मच। मैं इसमें एक और सो चीज़ ऐड करना चाह रहा ओके, था विच इज़ के जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा कि अभी माइक्रोसॉफ्ट की एक और टेक्नोलॉजी भी आ रही है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, जिसके अंदर ये है कि आप एआई से डिज़ाइंस बना सकते हैं विच इज़ वेरी स्टनिंग और बड़े मज़े के। तो विच इज़ जस्ट प्रॉम्प्टिंग और उसके अंदर आप एडिटिंग भी बाद में कर सकते हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो यू कैन आल्सो गो फॉर डैट, डू चेक इट आउट। और उसके अलावा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी के साथ स्टिक रहना इट इज़ नॉट कंपल्सरी। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी में का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं गूगल टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, मैं फ्लटर एक्सपर्ट हूँ, लेकिन स्टिल आई एम माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर। क्योंकि मैं अब इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलता हूँ। मैं विंडोज़ यूज़र हूँ, मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता है, एज्योर को मैं फ्लटर के साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो देखें अब उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं तो माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ कर रहा हूँ ना। तो अगर आपको आपकी कोई भी फील्ड है उसमें आप किसी तरह भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर डैट। okay, thank you so much. This wraps up our session. I really thank everyone who joined this session and made it impactful, made it beneficial, and I really hope कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग एयर यूनिवर्सिटी में काफ़ी हमारे साथ काम करेंगे। I really hope. So thank you so much. That was really good meeting you all. And this ends our session. Ahmed, if you have anything to conclude with, you can.